A very good morning to everyone. It's said that just one small positive thought in the morning can change the whole day. And with this beautiful saying, I would like to welcome you all for the very new and fresh series, Self Discipline and Commitment. So, I would like to welcome our guest speaker today, Sister Brahmakumari Harsha. I would like to take you all through the profile first, moving on the session and the learning she'll be sharing with us. Brahmakumari Harsha is associated with Brahmakumaris since an early age and is surrendered since past 12 years. Currently, she is serving at Brahmakumaris Lokhandwala Andheri Center. She is faculty with the Business and Industry Wing of Brahmakumaris. So there are certain kind of programs at various institutes she have been taking, which is BPCL pre-retirement programs with various banks like Bank of Baroda, Central Bank, and Dena Bank, Adani Electricity, then Indian Institute of Oceanography, Times Group, and etc. Along with this, she have conducted various online Raj Yoga and meditation session during the lockdown period, and she have been the value-based champs programs have run by her for children and adults. Didi, we welcome you for this session, and we would like you to hand over for this session for the series Self Discipline and Commitment. Welcome. Good morning. I'm audible, right? Yeah. Yeah, Good morning. thank you. We all want discipline in life, and we all want to be committed. And that's the reason every year we try to make some resolution. Every new year, कल से ये करना है and कल से ये नहीं करना है. And फिर क्या होता है? Many times the resolutions are short-lived, right? अगर देखा जाए तो we have a huge list कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो आज हम जानेंगे कि इस डायरेक्शन में, इस दिशा में क्या लूप होल्स होते हैं and what has to be done so that we reach a goal of self-discipline and commitment. I'll try to share a presentation. Before self-discipline, one very important thing I'll have to understand, which is who is this self who wants discipline and commitment. दुनिया में कहते हैं अगर कोई भी बीमारी हो तो उसे ठीक करने के लिए हमें उसके जड़ तक जाना चाहिए, तभी ही उसे इरेडिकेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. So same with life also, same with everything. Once I understand everything from scratch, only then I will be able to move forward. Before discipline comes self. And who is that self who wants discipline? The answer is very simple. That real self is I, the soul. When we say we are human beings is made up of two words, and one is human and the other one is being. Human is derived from the word humus, which simply means soil, whereas on the other hand, being simply means energy, soul. So human and being is a combination, which is the body and the soul. Body is non-living, and it's the soul, the living energy inside this body, which is living, which is who I am, my real self,
हम एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है. This body is my costume, my instrument, a machine, a vehicle, and I, the soul, am the operator. So I will have to understand कि मैं कौन हूँ. The most simple question of the world, who am I? And now we know I'm a soul. If my consciousness is of soul consciousness, अगर हमारा बीज अच्छा है, इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक झाड़ है which is green and एक झाड़ है जो सूखा हुआ है. अगर किसी भी झाड़ का बीज अच्छा है तो अंडरस्टूड है कि जब वो बढ़ेगा तो उसके फल भी बहुत अच्छे होंगे. अगर बीज फॉल्टी है तो फल उतने अच्छे नहीं होंगे. रिजल्ट वोंट बी एज रिक्वायर्ड. सिमिलरली, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं एंड जो हम करते हैं, इसमें कई बार सिंक नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है. सोचते कुछ है, बोलते कोई कुछ और है कई बार, एंड जो सोचते हैं बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं. अब इस सीक्वेंस में प्रॉब्लम क्या है? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं. अगर हमारा एंड प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स में प्रॉब्लम है. वो इनिशियल लेवल में देयर इज सम लूप होल. तो जो हम सोचते हैं, माई थॉट्स, माई इमोशंस, माई कॉन्शियसनेस, दैट इज द रॉ मटेरियल. एंड वही रॉ मटेरियल प्रोसेस होके फिर हमारे वर्ड्स बनेंगे एंड फिर हमारे एक्शंस बनेंगे. हमें अगर हमारे एक्शंस को चेंज करना है तो हमें वो जो पहला प्रोसेस है ना, दैट फर्स्ट लेवल, हमें उस पे काम करना पड़ेगा, which is of our consciousness. And that consciousness is, if I am soul conscious, if I am what I am, तो उससे जो थॉट्स, जो इमोशंस उत्पन्न होंगे, that will be based on values, goodness. अगर हमारा सीड बॉडी कॉन्शियसनेस का है तो उस पे जो फल उत्पन्न होंगे वो होंगे वाइसेस के, which will be anger, ego, greed, attachment, jealousy, fear, so on and on. तो हमें इस रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, which is my consciousness, right? Moving forward, we all want discipline in life. हम दूसरों में भी चाहते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, whoever, हम चाहते हैं कि सब डिसिप्लिन से चले, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. What is discipline? Discipline is to do what is to be done and not to do what is not to be done, right? How do I get this discipline? ये कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं? उसके लिए थोड़ी बातें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी. One very, very important factor which will get the discipline in our life. What is to be done is to be done. What is not to be done is not to be done. And for that, we require very good determination in our life. What is determination? It's not just a thought, but a very strong thought. सिर्फ संकल्प नहीं है,
बट एक दृढ़ संकल्प है, एंड दृढ़ संकल्प इज ओनली वन थॉट, सिर्फ एक संकल्प, उसके आगे कुछ भी नहीं। दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है विच इज ओवर थिंकिंग। सोचते बहुत है एंड कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन इज दैट वन स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल थॉट जिससे हमें पकड़ के रखना है। डिटर्मिनेशन इज नॉट ज्यादा सोचना, डिटर्मिनेशन इज कम सोचना, बट क्वालिटी थॉट सोचना। द रेशियो इज इनवर्स। ज्यादा सोचेंगे तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी सोचेंगे तो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। एंड जब क्वांटिटी कम होती है एंड क्वालिटी हाई होती है तो हमारे थॉट्स में वो पावर आती है। एंड इट्स थ्रू दिस पावर कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेडिटेशन इज समथिंग दैट हेल्प्स कि हम अपने थॉट्स की क्वालिटी को रेस कर सके। मेडिटेशन इज नॉट कि हमें सोचना ही नहीं है, माइंड सोचे ही नहीं। नो, दैट कैन नेवर बी डन बिकॉज अ माइंड इज ऑल अबाउट थिंकिंग ओनली। मन का काम ही है थॉट्स क्रिएट करना, संकल्प क्रिएट करना। बट विथ मेडिटेशन हम उनकी क्वांटिटी को कट डाउन कर सकते हैं बाय रेजिंग इट्स क्वालिटी। वन थॉट, इफ आई कैन गिव वन एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले हम चाय पीते थे एंड समथिंग हैपेंड एंड देन आई थॉट कि ओके आज से हम चाय नहीं पियेंगे। उसके बाद कई बार थॉट आता था चाय पी लूं, चाय पी लूं, बट बैक ऑफ द माइंड दैट वन थॉट, नो चाय नहीं पीनी है, चाय नहीं पीनी है। दूसरे पूछते भी थे अच्छा आप चाय पियोगे, एंड आई वुड बी लाइक नहीं हम चाय नहीं पीते। वो थॉट रिपीट करते 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 एंड टुडे आज थॉट भी नहीं आता है कि हमको चाय पीनी है। अगर कोई बोल भी दे माई इमीडिएट रिएक्शन विल बी नो, माई फर्स्ट थॉट विल बी नो। बट उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आई कैन नॉट डिलीट एनीथिंग फ्रॉम माई लाइफ। मुझे अपने मन को समझाना पड़ेगा कि अच्छा ये नहीं करना है तो क्या करना है। अगर एक छोटा बच्चा है उसे हम कहें कि यहाँ पे नहीं खेलो, डोंट डू दिस, वो घूम फिर के थोड़े टाइम के बाद वहीं पे आ जाएगा खेलने के लिए। हमने उस बच्चे को कहा यहाँ पे नहीं खेलो, बट हमने ये नहीं कहा कि अच्छा कहाँ पे खेलो, तो वो समझ नहीं पाता है। तो हमें उससे वो दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा। उसी तरह अगर कुछ नहीं करना है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। हम चाय नहीं पीते बट यस हम सुबह उठ करके कोई ना कोई जूस पीते हैं, मूंग का पानी पीते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव डन। इसलिए अभी थॉट भी नहीं आता। द लॉजिक इज वेरी सिंपल, वी कैन नॉट डिलीट एनीथिंग, we can only replace it with something else. मुझे गुस्सा नहीं करना है, I cannot delete गुस्सा, that never works, that never works. मुझे गुस्सा नहीं करना है, नहीं, wrong programming. The right programming is I'm a peaceful soul. I'm a peaceful soul. क्या करना है मुझे वो सिखाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। And that is how then determination, discipline comes in our life. पहले के जमाने में वो रेडियोस होते थे जिनमें एंड में वो एक बटन होता था रिकॉर्ड। कोई कैसेट है
उसमें हमें कुछ भरना है, भरने के लिए उन बटन्स में कभी डिलीट का बटन नहीं होता था. There was only one button which was record, and the moment you record, auto delete है, auto delete, it overrides. तो हमें delete करना ही नहीं है, no need, unnecessary. The only solution is record something new, and जो पुराना है वो auto delete हो जाएगा. And this is how it works, huh? And then discipline leads to commitment. Then एक स्टोरी है, रियल स्टोरी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. किसी ने सुनी भी हो तो ठीक, नहीं सुनी हो तो इट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. बॉम्बे में कुछ सालों पहले ताज होटल में ब्लास्ट आदि हुए थे, अगर याद हो तो उस टाइम पे, उस दिन उस होटल में कई गेस्ट थे, करीबन 500-600, जो वहां पे रूम लेकर रह रहे थे, प्लस 500-600 वो भी गेस्ट थे जो कहीं से आए थे कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट्स आदि में, प्लस कुछ 500 एम्प्लॉयज थे जो उस दिन वहां पे ताज में थे. सो लॉट ऑफ पीपल. एंड जैसे ये ब्लास्ट आदि हुआ, जो सारी हलचल आदि हुई, एंड द वंडर इज कि जितने भी 500 एम्प्लॉयज थे उनमें से कोई एक भी नहीं भागा. 500, not even one. And everybody was surprised कि ऐसे कैसे. Then हार्वर्ड आदि में भी ये केस स्टडी किया गया, एंड वहां के लोगों ने भी यहाँ पे इंटरव्यूज आदि लिए कि why do you think, इवन टाटास उनके इंटरव्यू लिए गए कि आपको क्यों लगता है 500 में से एक भी एम्प्लॉय नहीं भागा. एंड दे सेड वी डोंट नो. हमने उन्हें ट्रेन किया है कि आग लग जाए तो ऐसे करना, वो करना, बट हमने कभी उनको ऐसे ट्रेन नहीं किया कि जान पे बनाए तो भागना नहीं. एंड फिर जो उसको स्टडी आदि किया, इसका एक मेजर श्रेय वहां की एचआर पॉलिसी को जाता है. इनकी जो एचआर है, ये बड़े बड़े शहरों में कई बार रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जाते हैं, ये छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, नागपुर, कोल्हापुर आदि आदि. एंड उन कॉलेजेस में जाकर के वो एक लिस्ट मांगते उन बच्चों की जो एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, 80-90% आदि आदि. एंड और एक लिस्ट मांगते हैं उन बच्चों की जो एकेडमिकली इतने अच्छे ना भी हो, बट दे आर गुड सोल्स विद सॉफ्ट स्किल्स. टीचर तो जानती है ना कि वैसे कौन से बच्चे होते हैं अच्छे वाले बच्चे, कि टीचर डांट भी दे, अगेन नेक्स्ट डे वही बच्चे कहेंगे गुड मॉर्निंग मैम. सो टीचर नोस. एंड फिर वहां की एचआर जो एकेडमिकली अच्छे हैं उनके लिस्ट वापस दे देती है, एंड वो जो सॉफ्ट बच्चे होते हैं उन बच्चों को रिक्रूट करती है. गांव में ऐसा होता है ना कि बड़ी बहन हो एंड छोटे भाई बहन हो, तो बड़ी बहन पहले छोटे भाई बहनों को खाना खिलाती है, बाद में खुद खाती है. तो वही संस्कार, वही गुडनेस जो उन्होंने घर में प्रैक्टिस की थी, वो यहां पर लेकर आए कि जब ये यहाँ पे होटल में है, गेस्ट आदि है, तो इनको छोड़कर मैं कैसे भागू, हम कैसे जाए. इसलिए वहां से एक भी एम्प्लॉय नहीं भागा. एंड दे आर वेरी क्लियर. आप सिर्फ अपनी गुडनेस लेके आना, your values, your संस्कार, even if few,
your honesty, your discipline, your commitment, your punctuality only bring your goodness. We'll train you on the job. We'll train you, don't worry. The logic is very simple. Anything which is value-based, जिसका foundation values है, they live long. Be it on a micro level or on a macro level. अगर आज हम भारत को देखें, तो भारत की क्या महिमा है सारे विश्व में. And it's only because of the value system that we have now, a strong culture. What is culture? Culture is the values that we have. अगर हम टाटास को भी देख लें, किसी को भी देख लें, any company, any individual who are value-based, they live long. They live long. And कहीं ना कहीं spirituality इसमें help करती है कि हम इन values को, determination को, goodness को, इनको हम अपने life में inculcate करें, इनको अपने जीवन में हम इसको धारण करें. This is actually real wealth, a goodness that we have within. अच्छाई के लिए भी ना मेंटेनेंस चाहिए. हम सुनकर अच्छे नहीं बन सकते, पर हमें अच्छाई को प्रैक्टिस करना पड़ता है. आज बॉडी के लिए मेंटेनेंस चाहिए, हमें 3 टाइम खाना है, पानी पीना है. उसी तरह गुडनेस आत्मा का हिस्सा है. Peace is not part of the body, it's part of the soul. Happiness, this is what I am, it's related to the soul. तो हमें ये बेसिक्स क्लियर करने हैं, एंड फिर जो बेसिक है ना उसको मेंटेन करना है. मेंटेनेंस चाहिए, एवरी डे मेंटेनेंस चाहिए. इट्स नॉट 1 hour, इट्स नॉट 1 day, इट्स एवरी डे. इट्स अ लाइफस्टाइल. हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? इट्स अ लाइफस्टाइल. मेरे थॉट्स क्या है? इट्स अ सात्विक लाइफस्टाइल. मेरे इमोशंस क्या है? अ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल. And lifestyle is something that we carry every day, day in, day out. And this is where spirituality, meditation really helps. Along with determination, we also have then deep realization, which is very much required. Deep realization. Realization is look through the real eyes. कि real क्या है, सत्य क्या है. And if there is something that I realize dearly, deeply, फिर वो जम जाता है अंदर. And that then becomes part of me. And for deep realization, one very beautiful thing we can do is talk to yourself. Talk to yourself, खुद से बातें करो. दूसरे हमें सिखाए, दूसरे हमें समझाए. That is external motivation that works, and many times that works for short time only. But if I want that permanent motivation, real motivation, then that motivation should come from within. Meditation is a very beautiful technique जो हमें खुद से बातें करना सिखाता है. See, the irony is, अगर दुनिया में कोई खुद से बातें करे तो लोग क्या कहेंगे? Right. हम दूसरों से बातें करें घंटों, absolutely normal. And कोई खुद से बातें करे तो पागल. That's the reason this is Kali Yuga. कि जो नॉर्मल है वो एब्सोल्युटली अबनॉर्मल लगता है, एंड जो अबनॉर्मल है वो नॉर्मल लगता है. गुस्सा करे नॉर्मल, अगर सहन करे तो लगता है अरे ये तो कमजोरी है आपकी, आप कितने कमजोर हो.
उल्टा हो गया है। मेडिटेशन इज सिंपली अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। खुद से मिला करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद से बातें करो। खुद से बातें करना इस अंदर काम करना एक प्रोजेक्ट है, एक काम है। चाहे कोई भी टॉपिक ले लो, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, बैठो खुद के साथ बातें करो, इट्स ओके। शायद आज उनका मूड ठीक नहीं होगा, शायद इस आत्मा के साथ मेरा किसी जन्म का कोई हिसाब किताब है, शायद मैंने इनको कभी दुख दिया होगा। उस आत्मा को इमर्ज करके आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई विश यू ऑलवेज बी हैप्पी, आई विश यू ऑलवेज बी फाइन। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे बैठ करके बातें करके मुझे उस बात को सॉल्व करना पड़ेगा। पीस लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेंडिंग इश्यूज बनेंगे एंड यहाँ का बैकलॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। सो मेनी पीपल गोइंग टू डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस हद तक कि सुसाइड कर लेते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं, क्योंकि यहाँ के पेंडिंग इश्यूज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं एंड वो बैकलॉग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 अक्यूमुलेट हो जाता है एंड देन कम्स वन ट्रिगरिंग पॉइंट, वन स्मॉल ट्रिगरिंग पॉइंट एंड फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। पीपल देन थिंक, अरे इतनी तो छोटी सी बात थी, व्हाई आर यू रिएक्टिंग सो मच। वो ट्रिगरिंग पॉइंट भले छोटा सा हो, बट वो जो अक्यूमुलेटेड है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। So this is where deep realization helps. And for realization हमें नीचे जाना पड़ेगा। अगर हमें पानी भी चाहिए, सोना भी चाहिए, तो हमें कितना नीचे, जमीन के नीचे खोदना पड़ता है, डिग करना पड़ता है, and then we get all the treasures. नीचे जा करके जो ट्रेजर्स है उनको ऊपर लाना, उनको ऊपर ला करके उन्हें यूज करना। This is where spirituality helps. Actually, we have everything. Huh? We are God's children. His ocean of love, ocean of peace, ocean of happiness. I, being His child, I'm also originally embodiment of peace, love, happiness. I am already full, peaceful, powerful, knowledgeful, blissful. I'm already full. But the strange part is, हम अंदर का कबर्ड खोल के कभी देखते नहीं है ना, फोकस बाहर ही है। इतने एक्सट्रोवर्ट हो गए कि सूरज चांद सितारों पे क्या हो रहा है, उस दुनिया में क्या हो रहा है, ये सो क्यूरियस। बट हमारे अंदर भी एक दुनिया है एंड इस दुनिया में क्या हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अ यू टर्न। इतना दूर निकल गए कि खुद से कनेक्शन टूट गया। नाउ सिंपली टेक अ यू टर्न and come back to what is basic self. डिसिप्लिन तो बाद में फ्रूट है, डिटर्मिनेशन फ्रूट है, बस लेट मी कम बैक होम, राइट। Commitment, discipline, goodness, they are a family of values, virtues. And if you work on them, एक झाड़ को भी ना पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, लाइट चाहिए, सब कुछ ये इन्वेस्टमेंट है। एंड अगर हम भी खुद में इन्वेस्ट करेंगे ना, our time, our energy, our thoughts, our resources, तो खुद में जो अच्छाई है वो फ्लरिश होगी, विद टाइम वो फ्लरिश होगी, राइट। ये तो बाई प्रोडक्ट्स है, बाई प्लॉट्स है, बट मुझे खुद पे काम करना है। दुनिया का बेस्ट काम है खुद पे काम करना।
एंड अगर खुद पे काम करेंगे तो हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, हमारा काम अच्छा होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा. एक काम एंड लार्जर बेनिफिट, मल्टीपल बेनिफिट, मल्टीपल, राइट. तो 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे. We'll meditate for some time. Let me close my eyes. Sitting quietly. In this moment of silence, I choose to be with myself today. I wind up my thoughts from everything outside. No relations, no work, no responsibilities. Just being with myself. Enjoying the silence. A big realization for me. That I'm a point of light. I'm actually not this body. Inside this body, below the brain, I visualize a tiny point of light. A conscious living energy. This is me. This is what I am originally. I am an embodiment of peace, of strength, from today onwards. I'll see myself in a different light, with a new identity. I'm so happy today to meet myself this way. I can be my best friend, whom I can meet, I can talk to. मैं जो हूँ जैसा हूँ, आज खुद को मिलकर I'm very happy. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.
Thank you so much, Didi, for conducting the session today. I must say, indeed, a very healthy session for our mind for rest of the day and the week itself. And I really believe that whatever learnings you have shared, as per my experience, even when we share our experiences with Sangeeta Didi, definitely the self-discipline session, whatever taught by you, will be taken care at the best by our employees and us all together. Thank you so much again, and thank you everybody for attending the session. Let's meet next week with the next learnings and the new fresh start. Thank you.